सभी सम्मानित मंच और प्रेस के लोग, आज विशाखापट्टनम में यहाँ पे आए और ये काफी दिन से बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे भी आ जाए, प्रोग्राम यहाँ पे करें। जिस तरह से 3 कानून ये एग्रीकल्चर पे लेके आए हैं और एमएसपी पे कानून नहीं लेकर आए, इसी तरह से ये इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारी हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम करा जा रहा है। विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट है इसको भी बेचने का काम करा जा रहा है। वो ये प्लांट है कि जिसमें किसानों ने अपनी जमीन दी थी कि यहाँ पे रोजगार होगा, हमको रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का पूरे का तरक्की होगा। लेकिन आज ये इंडस्ट्रीज हो या दूसरे करीब 23 के आसपास जो बड़े भारत के संस्थान हैं, वो पेट्रोलियम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इन सबको भी बेचने का काम करा जा रहा है। जैसे ये स्टील प्लांट है, इसी तरह के और भी बहुत से वह जो बड़ी संस्थान हैं उनको बेचने का काम करा जा रहा है। हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा मजदूरों के हक में, किसानों के हक में, जो दुकानदार हैं उनके उसमें, क्योंकि वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी देश में आएगी तो छोटा जो दुकानदार है वो भी खत्म होगा हमारा। जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं वे भी खत्म होंगे, क्योंकि इनकी नजरें चैन से लगा। You all know we have a campaign against 3 farm law, and we are demanding the minimum support price should be legalized. All purchase must be on MSP, not less than MSP. That is our demand, and it is a continuous struggle. Today we are here in Visakhapatnam, and you all aware about what happening with the Visakhapatnam steel plant. It was established, the land donated by the farmers. That time the local people, they were should be provide the jobs for the local people, and it should be a future of the laborers, farmers, and the people of the region. What happening now? The central government slowly they are going to sort out all the public sector projects. They already sold out 23 public sector organization. Now they are going to sell it, the Visakhapatnam steel plant. With the help of the 3 farm law, they provide the passage to the big agribusiness company to occupy the land. So it's a conspiracy. The leadership in Delhi, now the present leadership in Delhi, the government in Delhi, totally working for the business, big business community. They are not favoring the business. Business is already there, and a lot of small people are working and small projects are working. But they are not working for them. They are working for some selected big houses. Almost 80% project is purchased by the 2 families of the country. And not only Indian big houses, the big companies from all over the world, they are here now and they are seeking to capture the Indian market. You know, Indian Khudra Bazaar is more than 14 billion crore rupees per year. They want to capture the all Khudra Bazaar and other things. So
it is very crucial period for the country, and we need to understand, we need to learn what type of policy they have. India had the image on international level, the biggest democracy of the world, and India had the image of a secular country. Now India is no more as a secular country. India is more fundamental country than Pakistan and Bangladesh. Fundamentalism is growing because the people, those are in Delhi, they have nothing. They have no agenda for the youth. They have no agenda for the industry. They have no agenda for the development of the people. They have only agenda to capture the power with the help of the fundamentalism that is happening. And we have only way to fight. We must come together. All the laborers, farmers and small traders all should come together and start a common struggle if we want to save us, if we want to save the country. हम सबको इन इशू पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और जिस तरह से विशाखापट्टनम में जो ये स्टील प्लांट है, इसके संबंध में यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने लिख के दिया है, यहाँ के जो सोसाइटी है उसने लिख के दिया है कि ये नहीं बिकना चाहिए, इससे यहाँ के किसानों को लॉस होगा, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उसको लॉस होगा। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है जो यहाँ के लोगों ने लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वे इस तरह के प्लांटों को बेचना चाहते हैं। हमको पूरे देश में जो सोशल मूवमेंट के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं, वे लोग हैं, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी भारत सरकार के खिलाफ। जैसे दिल्ली में पिछले 5 महीने से जो किसान मजदूर वहां पर दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, इसी तरह के दूसरे नए फ्रंट हमको देश में खोलने पड़ेंगे। जब भी हम भारत सरकार में बैठे हुए जो जिस सरकार को कंपनी चला रही है, उनके खिलाफ हमको एक बड़ा मूवमेंट हो खड़ा पड़ना पड़ेगा। हमको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सभी प्रेस के लोग भी इसमें साथ दें, जो आम जनमानस है वो भी इसमें साथ दें। तो एक बड़ी तैयारी के साथ में हमको पूरे देश भर में जाना पड़ेगा और एक बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। You know, it was started from north, and in the beginning government, they, several times they mention it, the movement is from the Punjab and Haryana. Slowly they include the Western UP and Rajasthan. So we decided it must be a campaign on national level, and we decided to visit every part of the country for awakening the people, to include the people. They should come with us, we come all together and we start a national level campaign. We must include the farmers, laborers, small traders, youth. We want to include all the sectors, public, different sectors inside this. All, handicraft people, all are suffering due to this big manipulation of big business company. Nowadays, the government in Delhi total in the hand of the big houses and big companies, and their agenda is to promote the privatization. They sold out airlines, airport, railway station, and now BSNL is the next victim. They sold out the Bharat Petroleum. Lot of 23 organizations they already sold out, and now they want to sell the Visakhapatnam steel plant. So we are opposing all this type of privatization, and we are
with the people of the Andhra Pradesh or people of the Visakhapatnam, those donated their land for the development of this plant for their livelihood. So it's a common struggle, and all the farmers from the country, they are with the people, they are with the movement of the Visakhapatnam steel plant. We support this. And not only plant, it is not only question of one organization. They want to sold out all the public sector or organizations, and we need to save all these things. So far we are here, and we must come together and we start a united struggle to save our private sector and save our land, save our livelihood, and we start a struggle for the employment of the youth. Thank you.